Start with the name of Allah, the most merciful and beneficent. Hello friends, Assalamu alaikum and welcome back in our elementary science class. So our today's topic is motion and force. So let's start with what is motion. When an object changes position over time when compared with a reference point, we say that the object is in motion. And how object comes in motion when we exert a force on any object, it changes its position from one point to another point and cover a distance displacement. This is called motion. And what is force? Push or pull. Simply we say that push or pull is force. Force can cause change in velocity. And here are some example of force: gravitational force, magnetic force and frictional force. So here are two types of force: balanced force and unbalanced force. Forces that act on the same object are opposite in direction and equal in size. For example, here you can see that here is a truck, here is a truck, and two forces are exerted from front side and back side, and these are in opposite direction, and their magnitude is same, like 100 Newton from front side and 100 Newton from back side. So these forces are called balanced force. And here is unbalanced force: forces that are not opposite and equal. What do they cause? Change in velocity or acceleration. Here is an example of unbalanced force, that two forces are exerted on a truck, and 60 Newton from front side and 100 Newton from back side, and 100 Newton is bigger force than 60 Newtons, so this truck moves in front direction. And here's a type of friction force, that is friction force that opposes motion between two surface. It is called friction. For example, जब भी हम किसी ग्राउंड पर चलते हैं तो हम स्लिप नहीं होते. दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, एंड इट डिपेंड्स ऑन टाइप्स ऑफ सरफेस or force between the surface. If surface is rough, then friction become more. If surface is smooth, then friction becomes less. And here are some types of friction: static friction, sliding friction, rolling friction and fluid friction. Static friction, force between object at rest. For example, if one box is placed on a table, then the force of friction between table and box is static friction. And other is sliding friction. We can say solid surface slide over each other. For example, if we slide a roller on a smooth surface, then this type of friction is called sliding friction, just like as ice skating. And third is rolling friction, roller blading. Just like an object rolls over a surface, if any object rolls over over a slope or slide, this is called rolling friction. And the last one is fluid friction. Submarine, an object moves through a fluid. Friction in a fluid, for example, if a submarine move in a liquid water, then this type of friction is called fluid friction. Here is also friction is present. So here four types of frictions: static friction, sliding friction, rolling friction and fluid friction. Hope you will understand this. And next is friction always bad? It's an here is a question for you. You have to respond it. And now comes to Newton laws of motion. Newton first law: an object at rest remain at rest. An object in motion will continue moving at a constant velocity unless acted on by unbalanced force. For example, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इन स्टेट ऑफ मोशन है तो वो इन स्टेट ऑफ मोशन ही रहेगा जब तक हम कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे. जब हम उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो रुक जाएगा. और कोई भी अगर ऑब्जेक्ट अपनी स्टेटिक पोजीशन के ऊपर है, फॉर एग्जांपल कोई भी बॉक्स को हम एक टेबल पे रख दें और उसको हाथ भी ना लगाएं, तो वो मूव नहीं होगा जब तक कि हम उसको अपनी तरफ से कोई फोर्स नहीं देते. तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, इट रिमेन इन रेस्ट व्हेन एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज
एक्टेड अपॉन इट, अनबैलेंस फोर्स। हमने लास्ट स्लाइड में भी देखा था कि एक ट्रक पर जब अनबैलेंस फोर्स एक्सर्ट हो रहा था तभी वो मोशन कर रहा था, और बैलेंस फोर्स में नहीं। एंड हेयर इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। More force means more acceleration, more mass means less acceleration, and here is equation of second law of motion, that F is equal to ma. Here F stands for force, m stands for mass, and a stands for acceleration. If more force is applied on an object, will be accelerated more. फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी भी चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे वो जो है वो तेज़ी से मूव करती है। तो सेकंड जो लॉ है उसका यही मतलब है कि इफ़ वी अप्लाइड मोर फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट विल बी एक्सेलरेटेड मोर। Here man exert force on this trolley and this trolley moves, external unbalanced force. And here comes Newton's third law of motion. For every reaction there is an equal and opposite reaction. Force occur only in pairs, act on different objects equal and opposite. फॉर एग्ज़ाम्पल थर्ड जो लॉ है इसका मकसद है कि एक ऑब्जेक्ट की जो फोर्स है वो दूसरे ऑब्जेक्ट पर एक्सर्ट होती है और दूसरे ऑब्जेक्ट की फोर्स पहले वाले पे। यू कैन सी हेयर ए ब्लॉक एक्सर्ट फोर्स ऑन बी ब्लॉक एंड बी ब्लॉक एक्सर्ट फोर्स ऑन ए ब्लॉक, and they are opposite in direction and act on different object. You can see here that tires exert force on road and road exert force on tires. These are action reaction force, और इसी की वजह से जो है ये बस जो है वो मूव हो रही है। तो यहाँ पर हमारे न्यूटन्स के थर्ड तीनों लॉ कंप्लीट होते हैं। फोर्स और मोशन का कॉन्सेप्ट आ गया। नेक्स्ट स्लाइड में इंशाल्लाह ग्रेविटेशनल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को टच करेंगे। होप यू विल एंजॉय इट एंड होप यू विल अंडरस्टैंड इट टू।